Pakistani Muse, Literature and Music in Pakistan. The guests are Sani, Bangash, and Sarmad Khoosat. The moderator is Ali Sethi, and the duration of the session is 60 minutes. Did you get your free Diet Coke coupon? No, I have a coupon. Yeah? I didn't get one though. I think we should begin now. Welcome everybody to this session about music and literature in Pakistan. I'm Ali Sethi. I'm a writer and a singer, and I'm moderating this session. Very pleased to be moderating this session. Mic का volume थोड़ा बढ़ा दीजिए. Oh, I got it. Better? Can you hear? I'm joined on stage today by three distinguished आप नहीं हमारे साथ सरमद खूसत हैं. सरमद भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मगर मैं करा दूंगा उनका तारुफ. उनका तारुफ है कि सरमद एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं. सरमद ने वो बहुत एक्सट्रीमली वाइल्डली पॉपुलर टीवी सीरियल हमसफर बनाया. ही इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हमसफर. दोज ऑफ यू हु आर एडिक्टेड टू इट or have children who are addicted to it, this is the man who is responsible for that. Sarmad has also just made a fantastic new film on Manto. Film का नाम है मैं Manto, और उसका soundtrack बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बना है, जिसमें मेरा भी एक गाना है. दो हाँ, 2 गाने हैं मेरे. और सरमद के साथ बैठी हैं ज़ेबुन्निसा बंगश और ज़ेब एंड हानिया. ज़ेब इज किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मगर ज़ेब जो हैं वो सिंगर भी हैं और सॉन्ग राइटर भी हैं. अपने गाने खुद लिखती हैं इस दौर में जब हम when none of us really has any single language anymore. ज़ेब and Hania have been writing songs in Urdu, in Dari, in Farsi, in Pashto, and have really brought I think sort of marginalized popular culture into the mainstream through their music. तो आज हमने अभी एक प्रिलिमिनरी किस्म की आपस में गुफ्तगू की है इस मौजू पे. तो आई वुड लाइक इट टू बी कॉन्वर्सेशनल, ताकि आपस में भी हम बातें कर सकें, और फिर उम्मीद है कि थोड़ा सा गाना भी होगा. तो टीना जी, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू. मैं आपका फैन तो हूँ ही. मैं एक आपका पीस सुन रहा था अगले दिनों. मुझे वो होता है जब कभी फिट पड़ता है, एक एपेटाइट होता है कि आज ये गाना सुनना है, याद आ गया. तो मैं YouTube एक्सेस किया मैंने VPN के ज़रिए, और मैंने अपना वो बहार आई का सर्च किया. और पहले तो वो हमारे जो बचपन में हम देखते थे PTV का जो बहार आई था वो था, मगर साथ उसकी एक रिकॉर्डिंग थी, एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी चेन्नई में एक होटल की शाम की कहीं. और वहाँ आप बहार आई जो है आपने गाया है, और वो एक तरह से एक नया बहार आई था, क्योंकि उसमें आलाप एक आपका 2.5-3 मिनट का पहले एक आलाप है, और कमाल का आलाप है. और वो देख के मैं इंस्पायर भी हुआ, और मुझे एक इंस्ट्रक्शन भी मिली उससे कि कितना आपके गाने के पीछे, जो कि हमें सिर्फ एक गाना लगता है, उसके पीछे राग भी है, उसके पीछे रियाज भी है, उसके पीछे इल्मे मौसीकी है. थोड़ा सा मुझे बताइए कि आप हाउ डिड यू कम टू क्लासिकल म्यूजिक. आपकी जर्नी टू क्लासिकल म्यूजिक कैसे हुई? पहले मैंने एक जिंगल गाया था दोस्तों के लिए, और उस वक्त कोई ट्रेनिंग नहीं थी. जिस तरह के हमेशा ऐसा ही होता है ना कि जब आपको कुछ नहीं आता है तो आप समझते हैं आपको बहुत कुछ आता है. तो यूज्ड टू बी सो कॉन्फिडेंट, एंड आई सेड या मैं आके रिकॉर्ड कर दूंगी. रहबर वाटर कूलर का जिंगल था. दिस इज बैक इन 75-76. It took me 3 hours or 4 hours to get my voice straight on that mic, and then I realized कि ढोलकियों मोलकियों पे जो हम गाते हैं, है ना, इसी तरह हमारे सबके करियर्स जो हैं वो घरों में बैठे हैं. And our parents tell us all the time, you're brilliant, no one's better than you, and you start believing it till you go in the studio and you realize कि आपका सा सुर में नहीं लग रहा. I think that sobered me, and I enjoyed that experience in the studio, and I started learning. That's how it started. Yeah. So a poem like Bahar Aayi, Faiz Saab की एक मशहूर नज़्म है Bahar Aayi.
और नज़्म का गाना जो है वो मुश्किल होता है, गज़ल से ज़्यादा मुश्किल है कुछ तरह से, बिकॉज गज़ल तो मीटर होता है, उसमें आप लाइन होती है, तो वो जिस तरह बंदिश का म्यूजिक बनाया जाता है क्लासिकल में, कुछ मिलता जुलता है उससे गज़ल को ढालना। बिल्कुल बिल्कुल। मगर नज़्म जो है वो उसका ग्रामर, उसकी फर्क होती है। आई थिंक नज़्म को गाने से ज़्यादा कंपोज करना बड़ा मुश्किल है। एक लंबा पीस जिसमें आपने जैसे गर मुझे इसका यकीन हो is like about a 7-minute recording. It took us, I think it took Arshad 2 months to compose it, and it took me like maybe three weeks to sing it in parts actually, because it was difficult. और बिल्कुल ही मेरे करियर के शुरू में ही मुझे ये चीज़ें मिली। मुझे नज़्म वैसे पसंद बड़ी है। I think it's very powerful way of communicating. It's like storytelling. I don't enjoy singing ghazals as much, I'll be very honest. हमारे यहाँ ऐसे ऐसे गज़ल गाने वाले हैं कि एक कपलेट को लेके वो इतना कुछ कह जाते हैं कि मेरे पास वो वोकैबुलरी नहीं है म्यूजिक की. I'll be very honest. I found my, if I can use the word niche, I don't know, maybe. I found my love singing nazm. मुझे नज़म से बल्कि हाल ही में मैंने पूरा शिकवा जवाब शिकवा इसी चक्कर में गा दिया, क्योंकि मुझे एक कहानी गाने के थ्रू बताने का शौक था. दैट इन पाकिस्तान जिस धरती पे मेहदी हसन साहब और गुलाम अली साहब और फरीदा खानम साहिबा और इतने सारे बड़े बड़े गज़ल गाने वाले हैं, उधर चमकना बड़ा मुश्किल है इस काम में. मगर शायद मुझे नज़्म एक एरिया नज़र आया था जिसमें कम काम हुआ था, और जो भी काम हुआ बहुत गज़ब का था. मुझसे पहली सी मोहब्बत, दश्ते तन्हाई, उन दो में से, you know, those are great examples. So, but I truly enjoy longer pieces. I like to do an entire, जैसे आजकल मैं मसनवी पे काम कर रही हूँ रूमी की, तो वो होना चाहिए कोई 45 मिनट की परफॉर्मेंस एक, और बस उसके बाद बंदा उठ के चला जाए. You know, because that whole mood is there. Okay. अच्छा, यहाँ ज़रूरी ये है कि हमारे यहाँ गाने में जिस तरह देसी अंग में वोकल एक्सप्रेशन का इतना ज़्यादा कभी भी दखल नहीं रहा. सुरों से ही एक्सप्रेस किया गया ज़्यादा. मेरा ख्याल है जब तक हम लोग आए तो थोड़ा सा वेस्टर्न म्यूजिक सुनते सुनते, people like Barbara Streisand, I was such a huge admirer of hers. I loved the way she expressed herself vocally through her, you know, pitch, her whispers, you know. I think that I wanted to bring in a song like Gar Mujhe Iska Yakin Ho. And you want me to sing a little short piece of it? अच्छा नहीं, I'll just sing it like this. इसमें फंस जाऊंगी अगर ये चौथे में आ गया ना, because it scale change करता है. Just to जैसे अली कह रहे थे कि what do you mean when you how do you express? गर मुझे इसका यकीन हो, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, गर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की थकन तेरी आँखों की उदासी, तेरे सीने की जलन, मेरी दिलजोई मेरे प्यार से मिट जाएगी.
It's a बहुत लंबा piece है. मुझे डांट भी पड़ती थी इसमें because when I would crack my voice intentionally, so the composer would come and say कि ये तो आवाज crack हो गई है. And I said, this is intentional. I think Zev would relate to it now. But at our time, it was not the done thing to whisper. It was not the done thing to have a crack, because that was considered a flaw. And I think with all the flaws, I loved... so that's what I thought, would express a nazm. Actually, if I can add, that's one thing that I've learned from you, because I've heard you so much during that. That's one thing that is to keep that narrative feel within singing at all times, to not completely lose yourself. So I'm flattered. I'm flattered because I heard her on Coke Studio. I didn't know who she was. I called up Rohir and I said, these girls are magic. And they had done that lovely Dari song. And we're planning to sing a song for the last, 4 years now? Yeah. It's tough. This is a great segue. This is a great place for you to tell us how you can elaborate about this narrative aspect of singing. Yeah, I mean, because a lot of us grow up either hearing... There's either folk music or there's which of course has its own beauty, but storytelling and that person-to-person communication, and where you actually feel in every whisper, every little crack of the voice, like you said, sometimes really making your voice hard and hoarse in certain syllables. That kind of thing was something that I think was very, very something that I really kind of learned from you. We also had a very, very expressive singer. I mean, Madam Noorjahan was brilliant at that also. But this was a little bit more, I think, subtle. So I kind of, I was inspired by these wonderful women in my life. And it really helped me, especially now since I'm doing different kinds of music. I'm also doing playback. So it's helping me a great deal, because the whole kind of challenge in doing someone else's composition, just being a singer and not a songwriter in a song, is kind of doing justice to the vision of the composer, but then also putting your unique stamp in. So that, I mean, it helps to be connected to your expression and to your way of literally speaking come through your song. So, Somebody was saying to me a little while ago, and I have to say this myself because I would have begun to believe it, that and I mentioned this to you in the email that we had, was that but it's really because it's always been an under-literate society. I mean, if by modern standards, it's an under-literate society, in that literacy rates are measured by people's ability to find their name, etc. And yet, we are a very highly cultured. We're a very highly poeticized culture. Like everybody speaks about poetry. शेर जो है और कलाम जो है वो लोगों की भजन जो है बोल जो है, they're a part of people's sacred life, they're a part of people's spiritual life, they're a part of people's personal lives, they're a part of our political lives, etc. And the thing that somebody said recently was that if it had not been for the great singers of the subcontinent, so much of the great poetry of the Indian subcontinent would have fallen on deaf ears. Because it is music that has, in fact, and this is not just a modern post-recording era phenomenon. मज़ारों पे जब से भी गाया जाता है कलाम, तब से उसका एक फंक्शन है बड़ा हीर का प्रसार. So I want to ask you, as singers in this place, you feel, I had an author say to me recently, singers have it the best in South Asia because singers are vital lives in South Asia. You will always be rooted and connected to people. And the connections that you will make with audiences will transcend so many of these barriers that otherwise we have to. How do you feel about that? Do you feel that you are vehicles of मसले की बात कर रही हैं, मौलाना रूम की ज़ेब जो है वो उन्होंने वो करीब में बहुत सी खूबसूरत चीज़ें ला रहे हैं, जो कि हमने सुनी नहीं, मगर आप जैसा बताते हैं कि वो
transmitted to you. So can you talk a little bit about this transmission? Okay. Yeah, I mean, again, you're so right that, you know, our culture, the way we experience it, is so rich in the way we interact with each other. And somehow, like, you know, that doesn't get, on paper, it's never ever reflected. And sometimes I feel even in our self-image of ourselves and, you know, how we feel about, you know, our culture or our level of sophistication. And I think all of that is really beautifully encoded in our music. And for me, this music came through Afghan refugees that were playing at my grandmother's home all the time. And as the 5-year-old, I had no sense of... I didn't think it was a big deal that I didn't understand the language, because I didn't really understand any language in that kind of depth. But I was quick to pick up the songs and the lyrics and the rhythm, and then it stayed with me. And somehow in my memory it was encoded. And later on, when, you know, decades later, when Hania and I sat down to really start writing our own songs and stuff, we felt that those songs were kind of a part, the Dari songs that we'd heard were part of our memory, they were part of our experience, and somehow we didn't find them around anywhere. And we felt that it was an important thing to at least bring them out, because they were speaking to us. And I never really expected it to have such a crazy, you know, reception. I thought that maybe some people in, you know, some Persian-speaking families somewhere would be, you know, appreciative of what we had done. But I did not expect, you know, people who studied Carnatic music to say, this is my music. I did not expect, people from Calcutta to say, this is our music. I had not expected, you know, emails from Turkey claiming that this was their scale, this was their music. And so another thing that I realized was that it's not only in form that it is complicated and sophisticated, but even the history itself is so deep, and that shared cultural history that we have in the entire region is actually encoded in these tunes. And so for me, like, this was not just a way of, like, you know, expressing talent or expressing, you know, creative expression. This was a way for me to connect to lots of people all over the world today, but also to my ancestors and to my history and to my land in a way that I could have never ever done, you know, in any other way. So it's fun to be a singer. It is. A little Laili Jaan. Little Laili Jaan coming over. Where's the Shruti box? I was promised some support. Okay, so I'm going to sing this, and I want everyone to help me, please. May I? Laili, 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 John, 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 dile makardi wairan, dami kishlok namadi, why, mara kushti baharman. Laili, 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 John, 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 dile makardi wairan, dami kishlok namadi, why, mara kushti baharman. La 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 Az bala baran omad, yarim badalan omad. Az bala baran omad, yarim badalan omad. Yak bosa talab kadam, John, John, chashmish bagiriyan omad. Yak bosa talab kadam, why,
چشمش به گریان آمد لیلی 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 جان 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 دل ما کردی ویران دمی کشلاک نامدی وای وای مرا کشتی به هرمان لیلی 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 جان 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 دل ما کردی ویران دمی کشلاک نامدی وای وای مرا کشتی به هرمان لیلی 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 جان 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 دل ما کردی ویران دمی کشلاک نامدی وای وای دمی کشلاک نامدی وای وای دمی کشلاک نامدی وای 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 مرا کشتی به هرمان. Thank you. That was flawless. And thank you for the support. You guys were in beat all the time. So thanks for that. Thank you. It's a great opportunity to bring up the Shruti boss. The Shruti boss, as we all here testify, is the Sahara of South Asian singers. That's right. That's right. And if I could ask Tina Ji and Zaid to talk a little bit about classical music, about the importance in your lives of I know Tina Ji has been a disciple of Khayal and Tubi. I know Zaid is a disciple of Khayal. Zaid and I are disciples of the same Ustad Naseeruddin Sani जिनका ये शहर है. आपके थोड़ा सा अपने experiences के बारे में बताइए कि एक तो आपने कहा कि storytelling, sensibility, channeling, the personal connecting, etc. But where is the place in your respective musics of the tradition? You want to go first? I think there are two things that need to be understood. एक चीज़ होती है गाना सीखना, एक चीज़ होती है राग सीखना. दोनों में बहुत फ़र्क है. बहुत साल तक मैं राग सीखती रही, गाना नहीं सीखा. फ़र्क नहीं पता था. थोड़ी सी आंखें खुली तो अंदाज़ा हुआ कि learning to sing is an entirely different ball game. Where does classical come into it? Classical आपको एक तो discipline देता है. For instance, I know that I would by the hour, by the watch, just sit there. कभी-कभी मैं किताब भी ले लेती थी कि मुझे सिर्फ सा का रियाज करना है. It had to be built one day on top of another. There is no shortcut. In Pakistan, we don't have another system going. There are great vocal practices that you can get on the net, breathing practices and blah blah. मगर एक तो गाने में इसकी बड़ी ज़रूरत है. मगर अगर आप कहेंगे कि मेरे गाने में कहाँ इसकी, where did I find? I would mix. There were times that I would find myself doing a classical alap and go another way. मैंने पूरा ख्याल कभी नहीं गाया. मुरियारत सुनो गाया, मगर थोड़ा सा उसको लेके I wanted to go into nazm. I think that I enjoy poetry. मेरा मसला ये है कि मुझे लफ्ज़ बड़े पसंद हैं और मेरा ख्याल है कि to use, basically it's a vehicle. You use it the way you like a painter. You have colors, you want to paint whatever, but उसके गुलाम नहीं हो जाते. मुझे रोशनारा बेगम की बड़ी अच्छी एक बात याद आ रही है कि जब वो किसी गायक को सरगम गाते स्टेज पे सुनती थी तो कहती थी ये रियाज कर रहे हैं भाई स्टेज पे, ये तो रियाज की चीजें हैं. तो क्लासिकल को समझना कि इसमें जब तक कि बहुत ही कोई धुआंधार ताने ना हो और कोई सरगम लेके, या एक और बड़ा एक अजीब सा एक लोग करते हैं, बहुत लंबी सांस वाली तान लेते हैं जिस पे लोग तालियां बजाते हैं. I find that really funny because athletically the guy's got great lungs, but that's about it. तो ये कुछ जो हम हरकतें करते हैं कई दफा ये क्लासिकल से ज्यादा. आई थिंक इट्स सच एन, इसमें 5 मिनट भी अगर आप ओरिजिनल काम दिखा दें अपना
5 मिनट की बात कर रही हूँ, विदाउट रिपीटिंग योरसेल्फ, यू विल बी एन उस्ताद. 5 मिनट अगर आप रिपीट ना करें कोई भी एक वर्स भी, यू आर एन उस्ताद. एंड दैट, हाँ बिल्कुल. मैं क्यों याद आया, और लोगों को खुदा न खास्ता, मैंने कहा इतनी देर में ये वहम ना हो जाए कि शायद मैं भी गाना शुरू करने लगा हूँ कुछ अरसे में. 3 गाने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो और मैं तो बिल्कुल बिल्कुल. सरमद, मुझे आप बताइए कि पिछले साल का एक probably the biggest hit song in Pakistan is a song that goes वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी. तो सरमद, ये गाना जो है ये आपने कमीशन किया, आपने आपके टीवी सीरियल के साथ ये जुड़ा हुआ था, टाइटल सॉन्ग था गाने का और उसका शो का. थोड़ा सा हमें बताइए कि ये एक ऑलरेडी गाई हुई गजल जो है, इसको आपने एक तो क्यों सोचा कि आपको ये चाहिए, इसका रिश्ता क्या था, मौजूद जो आपका सारा वो जो थीम था, व्हाट डिड यू लुक फॉर? डिड यू लुक फॉर द वोकलिस्ट फॉर द यंग सिंगर फॉर द रोज, शी वाज नॉट कमिंग फ्रॉम अ क्लासिकल प्लेस और फ्रॉम अदर प्लेस, मगर आपने उनसे जो है वो उन्होंने गाया, वो भी हिट हो गई, गाना भी हिट हो गया वगैरह. हमें बताइए कि ये आपने एक नई चीज जो बना के कामयाब कर दी, ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से है? पहले तो जिंदगी में मेरा ख्याल है जो सबसे सक्सेसफुल चीजें होती हैं वो आमतौर पे वो हैं जिनको हम बाद में कहते हैं एक हसीन इत्तफाक या एक हसीन हादसा. सो हमसफर बजाते खुद मुझे एक बहुत बड़ा हादसा लगता है, और एक हादसा जिसके हम सब शिकार हुए. तो क्योंकि जो प्रोसेस है चीजें बनाने का, आप जब भी डिलिजेंटली या थोड़ा सा आप कॉन्शियसली कोई काम करते हैं तो प्रोसेस तो वही रहता है मोर और लेस, मगर उसको बाद में ऑडियंस उस दूसरे एंड से कैसे रिसीव करती है, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट मैकेनिज्म, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट. नाउ विद हमसफर, I think I cannot, of course, take the sole credit for the track. It was Waqar Ali and Momina Dureid who were very, very actively involved in the production. जहाँ तक बात थी पोइट्री की, तो somehow मुझे वही लगता है कि जब हम गाना किसी सीरियल के लिए या फिल्म के लिए सोच रहे होते हैं, तो मुझे लगता है वो बेतहाशा खूबसूरत चीजें जो ऑलरेडी लिखी हुई पड़ी हैं और जो हमारी हैं, तो उनको अगर उनकी एक जगह बन रही है तो उनको क्यों इस्तेमाल ना जाए. For that matter, I think आपदा परवीन जी का भी और बहुत से ट्रैक्स मशहूर हैं, but this is not one of her really popular tracks, या लोगों ने बहुत सुना नहीं हुआ था. और जब वो पोइट्री हसीन हादसा एक और उसमें भी बताऊंगा बाद में, तो वो हमने देखा उसमें 2-4 दफा हमसफर का लफ्ज आ रहा था, तो हमने कहा चाहिए तो बहुत अच्छा है, ये तो बिल्कुल ड्रामे के साथ जाएगा. बट देन ऑफ कोर्स वही एक लॉन्गिंग की बात थी, सेपरेशन की बात थी, तो समहाउ वो उसके जितने भी शेर थे वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट सिचुएशंस पे मुझे लगा कि फिट हो रहे. सो मोमिना एंड मी डिसाइडेड कि ये यही होगा. अबाउट द वॉइस, समहाउ आई डोंट नो, देयर वाज जस्ट दिस इम्पल्स. मुझे भी वही अगेन गाने की टेक्निकलिटी नहीं पता, लेकिन बस जब मजा आता है तो बस आ जाता है. You know, so that's how I take music. You know, if you're able to enjoy it, any genre, any kind, be it a dhamal, be it jazz, be it a ghazal, be it classical, अगर आपको मजा आ रहा है तो I think वो एक अच्छी चीज होती है, वो एक अच्छी मेरे लिए तो कुरतुलैन ने एक वो रेशमा का रेंडिशन छोटा सा किया हुआ था, और मुझे समां दिमाग में हमसफर करते हुए एक चीज फंस गई थी कि अच्छा अब ये वो जो कूल क्राउड है ना सारा, तो वो जो टीवी नहीं देखता अब, तो वो कूल क्राउड सारा जो है ना उसको ड्रामा देखना चाहिए. सो समहाउ, और वो इत्तफाकन वो हुआ भी फिर ऐसे कि लाहौर ग्रामर में और कराची ग्रामर में और कॉलेजेस में, और इवन आदमियों ने, बहुत से आदमी मुझे मिलते हैं, कहते हैं मैं बहुत शौक से आपका ड्रामा हमसफर देखता हूँ, मुझे जज मत कीजिएगा. मैंने कहा मैं आपको क्यों जज करूंगा, आप ड्रामा देखते नहीं, वो मुझे बड़ा पसंद है. तो आई एम जस्ट सेइंग, सो समहाउ वो जो एक चीज फंसी हुई थी, तो मुझे लगा आई शुड हैव समबडी youthful and fresh who should approach a track which is sung by Abda Parveen. I mean, that in itself is such a horror to take as a challenge कि एक चीज Abda Parveen ने गाई और अब आप उसको कोई और गाए. So I think we changed the genre. We had to have it look more like or sound more like a song rather than a ghazal or a qawwali-ish style, the way it's done. So it just all happened, trust me, on its kind of own. It just kept happening.
This is very interesting. I want to just point something out that all three of the panelists here today have spoken about and have shown their connection with the past. That is very interesting. कि अगर आप मौलाना रूम को गा रही हैं, अगर आप फैसला को गा रही हैं, अगर जेब जो है वो अफगान रेफ्यूजीज का गाना जो है या फोक मेमोरी जो है मार्जिनाइज लोगों की उसको आप स्टूडियो पे ला रहे हैं, या सरमद अगर एक आपदा परवीन की गाई हुई चीज को एक नई रॉक सिंगिंग टाइप आवाज निकाल के उसको वो हसीन हादसा एक जो बहुत बड़ा रह गया, तो वो जो हमारे शायर साहब थे, सो वो जब आए, हमसफर जब बम की तरह फटा, और तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा कि आप नए बच्चे और आप इस्तेमाल करते हैं पोइट्री, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं बड़ा खुश हुआ कि मैंने तो ये वो जब ढाका गिरा था ना उस पे लिखी थी, तो वहां पे कुछ मुझे लगा कि मैं किसी गार में एक जहालत के जिंदगी बसर कर रहा था। फिर मुझे जब वो लाइनें याद आई, अच्छा वो हम सफर था, अब नवाई ना थी, बेचते वक्त तो हमारी, मुझे तो फिर जनाब सारे बंगाली भाई जब याद आए और वो आवाम सारी, वो तो मैंने कहा ओहो, ये तो फवाद और माहिरा आर द न्यू सॉर्ट ऑफ फेस ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडी एंड इट्स अ ग्रेट रिमाइंडर नाउ। सो आई थिंक दैट वाज आल्सो अ वेरी interesting thing that happened. So he wrote it on the fall of Dhaka. So there is separation and there was longing, yeah. But it's interesting because even in our experience, we found that actually songs seem to have a destiny and a life of their own. And sometimes, we give ourselves credit. Like, for instance, a lot of people like, oh, thank you for doing this to Paimona. But sometimes I feel like it was what Paimona did to us. So, like, you just become like a vehicle. Because songs, when they come into the world, become these, like, living things. And then they move around with people. Bahar I just remember that something similar. When I sang it for the first time in Lahore, and I remember there was this huge, incredible response, and I didn't know, I was not ready for it, and serious level के ऊपर आपको बहुत लोगों ने अब now everybody is telling me कि आपको पता है आपने ये दुर्गा में क्यों गाई है? I'm saying जी आप बताएं क्यों गाई है? इसलिए कि और वो पूरा मुझे फलसफा बताया जा रहा है। हाँ, नहीं मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्या हुआ था, मुझे पता था दुर्गा में है, लेकिन जो मुझे वो बता रहे थे ना कि क्यों मैंने ये दुर्गा में की है, और आप लोगों ने बाहर आई का, और इसका दुर्गा से क्या ताल्लुक है और राग से क्या ताल्लुक है। I kept listening. I didn't have the heart to tell him कि my father had listened to अजय चक्रवर्ती जी, और उन्होंने बहुत खूबसूरत दुर्गा की एक बंदिश गाई थी। तो एक दिन अरशद आए तो उन्होंने कहा कि अरशद तेनू दुर्गा आंदी है? अच्छा, दुर्गा बहुत ज्यादा नहीं गाई जाती थी एज अ स्केल ऑन आवर टेलीविजन, स्टेट टेलीविजन, क्योंकि दुर्गा इज अ हिंदू डीएटी गॉडेस, तो उसके नाम से लेके राग तो टेलीविजन पे अलाउड ही नहीं था, बैंड था। दूसरा फैसा बैंड थे, तो आई थिंक वाज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, बिकॉज हमने इसको जब रिकॉर्ड किया था, ये तो बैंड पोइट्री थी, इसने कहीं नहीं चलना था, ये हम अपने शौक के लिए करते थे। So that was just a chance because my father loved Rag Durga, and Arshad took up the challenge and composed it in Rag Durga. इसको आप चौथे काले पे जी शाह जरा सा आहिस्ता कर दीजिएगा, बेहतरीन। ये अभी बता रहे थे कि इन्होंने कुछ चेन्नई की रिकॉर्डिंग सुनी थी जो जिसका आलाप ज्यादा था, वो इसलिए वहां पे क्योंकि राग दुर्गा साउथ इंडिया में बहुत गाया भी जाता है, पसंद भी किया जाता है ना। आई थॉट दैट आई अच्छा, बंदिश थोड़ी सी अजय जी की सुनाऊं मैं आपको, एंड देन यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट।
अच्छा, ये इतना लिमिटेड स्केल नहीं है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है इसकी मेलोडी का कि यू कांट. I've heard many variations of Durga. It basically comes down to few phrases. की बंदिश थी, जिस पे फिर अरशद caught on from there. बाहर आई तो जैसे एक बार लौट आए हैं फिर अदम से वो ख्वाब सारे, शबाब सारे जो तेरे होंठों पे मर मिटे थे, जो मिट के हर बार फिर जिए थे, निखर गए हैं गुलाब सारे जो तेरी यादों से मुश्कबू हैं, जो तेरे उशाक का लहू है। बाहर आई, बाहर आई। हाँ, दोनों बैंड थे, ये भी मत भूले। We have 15 more minutes. Can somebody tell me, please? Time 25, they're saying, Ali. Okay. 25 minutes. Yeah. Okay, but let me ask one question first. Well, all of you are drawing on rich traditions. Mm-hmm. You're drawing on rich musical traditions. You're drawing on rich literary traditions. Mana ke we have a very rich musical tradition and a literary tradition drawn. But what is the future? What are we going to do next? Are we forever going to be drawing on what has been transmitted and reinterpreting? It's a question that I am asked often. मैं किसी को जब बताता हूँ कि मैं classical music सीख रहा हूँ, लोग कहते हैं लेकिन तुम्हारी personality खराब हो जाएगी। मेरी उम्र के लोग जो कहते हैं, क्यों खराब हो जाएगी? ouch. सारा वो अपनी expression बंद हो जाएगी और पुराने ज़माने का वो सारा वो आ जाएगा तुम्हारे अंदर। क्या तुम्हारी अपनी I think you understand what I'm saying, that there's this fear or anxiety that those young people who want to get ahead, who want to look forward, who want to look to the future, who are also dehistoricized, unfortunately, deeply in this period,
आप किस तरह देखते हैं? आप तो उनको वो दे रहे हैं ना, जैसे आपने टीवी सीरियल के जरिए, आपने विदाउट कॉन्शियसली परहैप्स इंटेंडिंग टू, आपने एक कोक स्टूडियो के जरिए, आपने अपने पीटीवी के जरिए आपने तो पहुंचा दी वो तक चीजें, और वो उन्होंने तस्लीम भी कर ली और एम्ब्रेस भी किया और उसको, मगर do you recommend a classical education? Do you recommend an acquaintance with poetry? What is the future that you see for the rich, joint literary musical tradition of Pakistan? Oh, what do I recommend? Okay. I think that the more I'm, it hasn't, मतलब मेरी personality खराब पता नहीं हुए, change ज़रूर हुई है ever since I've done this, because I've started learning more about our historical traditions. And I think what I'm really finding out is everything that we are really kind of excited about today, or fusion, or responding to things, all of this has pretty much been done, like, and really beautifully in our tradition for centuries, for millennia. So, like, the more I get into it, I realize that ancient really is the real modern. Sure. And it was done in a very, very sophisticated, way. And so it's not really taking away from anything. If anything, I think the more I learn and the more I go abroad and I interact with musicians. I've recently set up a band in Brooklyn with a bunch of musicians there. And actually, the only thing I can really offer them is the little bit that I know about my tradition, because that's the only thing that really even excites them. And that's the only thing that because what we have here is melody in the way it's been developed, and even our rhythms, the way they've been developed, it's just so it's all I know. I mean, I don't know much about it, except I'm learning, except that it's very, very intricate, it's very sophisticated. And to learn that, I don't think it in any way stops you from interacting with anything. It gives you a great skill set. It gives you a great idea of who you are. And it actually really instills a lot of pride and ownership, from when it comes to your land, to your culture, to all of the traditions. For instance, I've recently come across Balochi music, and I've lived here all my life, and I've even lived in Quetta, for quite a few years in my life. But I didn't know, living in Pakistan, I had no clue how rich the traditional of music there is, and it's alive. There are world-class bands that play there. Folk bands that play there, and you have everything. You have North African rhythms, you have Carnatic scales, you have Persian poetry, you have, Arabic modes. All of that is existing in an alive and very, historical way today. But, here, Zabe, one of the things that your generation missed is what we used to get sick to our, I remember Pakistan television. And Rana Sheikh is sitting here, and she's this old hand of Pakistan television. हमारे यहाँ folk music, राग, रंग, मुख्तलिफ provinces की music, मुख्तलिफ styles की music. I have to admit, Pakistan television did a great job. Yeah. To what I see now, and I'm really sorry, all the channels, the more channels we have, the less music we're hearing, the less of that diversity that we used to. Sindhi music hoti thi, फिर पंजाबी होती थी, फिर वो एक राग रंग होता था. हम हर किस्म की music सुनते थे. I grew up listening to all kinds of music, चाहे वो पठाने खान थे, जरसांगा थी, my bhagi. You talked about your heritage, the Afghan heritage, and people loving Pemona. Years ago, I did a song called Khadi Neem Ke Niche. मुझे भी नहीं समझ में आती थी उस गाने का मतलब क्या है. And it was an overnight, I became known because of that song. And she was from Tharparkar, my bhagi. So. I think we have only about 10 minutes left. We should open it up to the audience. Questions? This young man here can... I can get the dust out of my...
Okay. I don't have a real question. It's more of a request. I'm a big fan of everybody on the stage right now. And this session is about music. There's been a lot of singing, but I'm sure nobody in the audience will mind some more. So I would really request Ma'am Tina Sani to sing a bit of one of my poems, one of my favorite poems that she sung, which is "Ye Haseen Shaam Apni." अगर आप वो थोड़ा सा सुना दें. और एक second request ये है, I have a bit of insider's knowledge about Sarmad Khoosat's upcoming film, which is Manto. Again, it's about literature and music, so Manto साहब की life पे वो film based है. And I know there's a duet in it, which has been sung by Zeeb and Ali Sethi. I would like you both to sing a bit about that. And I would like to ask Sarmad also to tell us a little bit about the music in this film. Actually, I think somebody needs to ask. Somebody needs to ask Sarmad, Ali questions. I think that we should let's take one or two more questions. Okay. And then we can end with some Sure. song. Tina, you will end with the song. Asif. Well, my name is Asif Noorani. My claim to fame is that I happen to be an admirer of Tina Sani. Okay. Thank you, sir. Well, I enjoyed Zeeb's music. It had feet tapping quality and it was very enjoyable. But I feel strongly, Ali, you have been asking too many questions. If I may ask you one question, that don't you think that the appeal is two-dimensional, जैसे हम दो आतिशा कहते हैं उर्दू में, कि अगर आपको माने भी समझ में आए और म्यूजिक भी समझ में आए तो फिर तो मजा दोबाला हो जाता है. मजा दोबाला होता है कि नहीं होता. बाहर आई में मजा दोबाला हुआ था, हालांकि वो किसी सूरत से ज़ेब का गाना कम नहीं था. Can I say something to that? Huh? No, I completely believe and agree with what sir is saying, but I think जैसा लेली जहाँ सुन के पता नहीं मेरा दिल चाहता है मैं छुट्टी पे चला जाऊँ कहीं और मैं बहुत सा डांस करूँ और रोज दिल करता है. हाँ ठंडी ठंडी चीजें पीऊँ, फल खाऊँ और कुछ बस ट्रेन पे बैठूँ. So I don't know, I think it's so much about just getting that that mood. So at times I believe music transcends beyond languages that way, and that's also very beautiful. I think languages are beautiful to listen to. I love listening to Pashto, for instance. I just love listening to it. It's something so. Yeah, I don't get a word of Bengali, by the way, but I believe Bengali sounds so beautiful in songs as poetry. And this is something that a lot of people say sometimes. They say, अगर आपके गाने समझ में आते तो ये बहुत बेहतर होता है. लेकिन मेरे गाने भी किसी न किसी की समझ में आ रहे हैं. सही है. तो शायद वो लोग यहाँ पे हैं नहीं, लेकिन हम हैं. Another question. There's a question right here. Is it on? Yeah. My name is Moni Mohsin. I have a question of Tina Sani. आपने कहा कि गाना सीखना और क्लासिकल सिंगिंग राग सीखना दो फर्क चीजें हैं. बिल्कुल. आप समझाएंगे इसका मतलब क्या? देखिए, गाना सीखना requires breathing training, posture training, किसी भी एक नोट के ऊपर टिकना, जो कोई भी किसी भी फन से हो सकता है, किसी भी डिसिप्लिन से हो सकता है. There are certain incredible exercises that you need to do regardless of what rag. There doesn't have to be a rag there. हमारे यहाँ बंदिश सिखाई जाती है और कहा जाता है गाना सिखा रहे हैं. मुझे इससे इससे मैं अग्री नहीं करती हूँ जी. परफॉर्मेंस के लिए ये आई थिंक मैं ज़ेब को शामिल शायद थोड़ा सा करना चाहूँ उसमें. हम आई थिंक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. वो टीना जी कह रही हैं कि रागों की जो बंदिशें होती हैं ना, कॉम्पोजिशंस जो होती हैं, वो ज्यादातर रिवाज अब ये है. आप टीना जी ये कह रही हैं कि याद कराई जाती हैं बंदिशें, वो जो स्टूडेंट्स को याद कराई जाती हैं. और जो टीना जी कह रही है आवाज लगाने का जो इल्म है, सुरों का कायम करने का जो इल्म है, इस पे आप वो दो मुख्तलिफ जमाने में बहुत था, अब कम हो गया बहुत ज्यादा. तो ये
वो तो महीनों या सालों एक राग पे सिर्फ रखते थे, बिकॉज दे वुड ऑलवेज से कि अगर ये सही हो गया ना तो सारे सही हो जाएंगे. That's हमारे उस्ताद हमें अभी भी यही कहते हैं. बिल्कुल, हम अभी तक उसी राग पे हैं. वही रहे बिल्कुल. अच्छा, question. There's this man here, a person here to have a question. I'm sorry, I'm not wearing my glasses right now. Yes, question. अस्सलाम वालेकुम. मैं एक कमेंट करना चाह रहा हूँ. दैट्स नॉट अ क्वेश्चन. जब मैं जिस ज़माने का हूँ, मेरे ज़माने के स्कूल भी टूट गए हैं, तो मैंने यंग तरंग से म्यूजिक सीन समझा है और वो रंग वापस आता हुआ कोक स्टूडियो में देखा है. तो मेरे ख्याल में बीच में जो हिस्सा है, आई डोंट नो कौन लोग उस पर गालिब रहे, आमीन के वो हट जाएं. और ये जो आप लोग कर रहे हैं और जो एक्सप्रेशंस हम आपके गाने में, नयरा नूर के गाने में देखा करते थे, वो एक्सप्रेशंस नहीं आते थे, अब वो फिर से महसूस होने लगे हैं. तो ब्रावो टू यू ऑल. थैंक यू. Any questions? Any questions? Any pressing, burning questions? There's a question. Comments? थोड़ा, I think in person बाद में you can hoard everybody. इनके पास question है, इनको mic दे दीजिए. एक mic दे दीजिए. I'm extremely curious about the Shruti box actually. Could you please discuss the etymology of the word Shruti, what it means, and the story of the box? जी जरूर, बड़ा अच्छा सवाल है और सबको ये सवाल करना चाहिए था, नहीं किया, उन्होंने किया. खुशी है इस बात की. आई थिंक श्रुति बॉक्स जो है ना, ये अब इसका मॉडर्न नाम है. ये एक इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है. जाता है तानपुरा है. और जो कम से कम हमारे उस्ताद बताते हैं हमें कि तानपुरा की जो लफ्ज है, इट इज अ करप्शन ऑफ द वर्ड तंबूरा. और तंबूरा जो है वो तंबूर एज इन टैम्बूरीन में जो लफ्ज है, तंबूर जो टर्किक वर्ड है, वहां से आता है. तो ये एटिमोलॉजी बताई जाती है. अच्छा, इसमें सिर्फ अगर आपने ये सवाल पूछा है कि ये क्या है और श्रुति क्या है, तो हमारे यहाँ हिंदुस्तानी जो क्लासिकल है वो मेलोडिक है, हार्मोनिक नहीं है. इसलिए इसमें हम कहीं से भी सा बना सकते हैं. सी शार्प का भी बना सकते हैं और जी शार्प का भी बना सकते हैं. और ये हमें स्टे नोट्स देता है, सा और पा, जिसके के कोई भी तीवर नहीं होता और कोई भी कोमल नहीं होता. ये कायम सुर होते हैं किसी भी राग में, सा और पा. अगर वो मालकौंस ना हो. बता देंगे कि कितना सा और पा मिल रहा है. एक मिसाल. First and the fifth note are the stay notes. There are 7 notes, sa re ga ma pa dha ni sa. Sa and pa are the stay notes. We sing those. ये क्यों हमें चाहिए होता है as reference? And then we sing from that reference point, from sa and pa. We remain within the rag. All right. If we don't have this, then sa shift हो सकता है, क्योंकि कान कभी पक्के नहीं होते किसी के. किसी ने चिड़िया बोली तो सुर चेंज हो जाएगा. So this keeps us grounded. Very very important in classical. और सीखने वालों को हमेशा इस पे गाना चाहिए, कभी हारमोनियम पे नहीं. That's the key. टीना जी, मेरे ख्याल में अब आपको जो रिक्वेस्ट थी आपसे, अब थोड़ा सा प्लीज आप गा के सुना दें. पता है क्या, मैंने तो बहुत गा दिया और मैं गा चुकी हूँ. I want to listen to something new. And Sarmad's gonna sing here. I want to listen to that song you guys have done. Do you know he is such a lovely singer. I heard him. Come on. अब आप बहुत बातें कर चुके हैं, अब हमें काम करवा चुके हैं आप. ज़ेब और मैं हम कुछ दिन पहले रंजिशी से ही गा रहे थे लाहौर में इकट्ठे मिलके. मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा वो ड्यूएट जो दरअसल हमने गाया वो हमको. चलो गाओ. अली सेठी ने मेरे लिए आँख को चाहिए भी गाया, बाय द वे, गालिब का. And it's a fantastic composition, new composition जो हमारे दोस्त हैं जमाल उन्होंने की है, and Ali has sung it beautifully. It's for the one of the tracks in the film. So I would also request अगर अली 2 लाइनें उसकी सुना दें. I was waiting for this moment. तो
आग को चाहिए कुम्र असर होने तक मिर्जा गालिब की ये गजल है, मंटो साहब को अपेरेंटली बड़ी पसंद थी. एंड मंटो साहब हैड दैट इंटेलेक्चुअल कनेक्शन विद गालिब और बहुत कम लोगों को मानते थे और गालिब वाज वन ऑफ द फ्यू जिनके मानते थे उनको. तो वो जो आखिरी सीन है सरमद की फिल्म का जहाँ मंटो साहब उल्टी वगैरह कर रहे हैं और अस्पताल ले जाया जा रहा है, सरमद ने कहा उसके लिए मुझे तुम्हारी आवाज में कुछ चाहिए. तो फिर आपको चाहिए कुम्र असर होने तक हमने सोचा कहाँ से निकाले, कंपोज करना, ताज़ा कंपोज करना तो मसले में पड़ जाएंगे. तो हमने पुरानी रिकॉर्डिंग जो थी वो कुछ निकाली और सुनी. उनमें सिकेल सैगल की एक रिकॉर्डिंग थी, आपको चाहिए कुम्र असर. तो हमने वो एक पुराने अंदाज में, टीना जी आप अप्रिशिएट करेंगे, वो जो एक पुराना अंदाज था कि एक ही सुर को बार बार लगाया जाए तरह तरह से. तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा अंतरे में थोड़ा चेंज कर दें. हम इसका जो मेन है उसको कांस्टेंट रखें, सेम रखें और अंतरे में थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन करें. तो हम जदीद भी हों और हम कदामत पसंद भी हों रहें, नजर आए. तो ये है. आह को चाहिए, आह को चाहिए एक उम्र असद होने तक. कौन जीता है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सद होने तक. आह को चाहिए, हमने माना के, हमने माना के तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे. हाँ खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक. आह को चाहिए. ठीक है जी, थैंक यू. It's sounding so good. Thank you everybody. Thank you for listening. Is the track out? Thank you. Nice, nice. Good. बंद हो गए अब, अच्छा खुल गए फिर से. अब हम अगले शो ने शुरू होना है जी मेरे ख्याल में. 3 मिनट ज़ेब आप शुरू करेंगे. रंजिश, हाँ अब रिक्वेस्ट आई जा रही है. हम सुना चुके, आप देर में आई हैं. अभी इनका मैं साथ दे दूंगी. चलिए मैं इनका साथ दे दूंगी. आइए हम सब गाएंगे, जिसको और भी आता है वो भी आ जाए. हाँ जी, आप सुर वो आप लोग करो, मेरा तो बहुत नीचे हो जाता है. No, it's. Can you give me a G? Ta-ra na na na, da-ra na ra, ta-ra-ra. रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए
सही किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। क्या बात है, क्या बात। What happened to the duet? People will have to leave. Thank you. Ladies and gentlemen, the next session will start at 4:45.